Bismillahirrahmanirrahim. Supreme Education School System. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing great. In previous class we were studied about the system software. Today we are going to study about the application software. So let's start our lecture. What is application software? Application software consists of programs designed to help users perform specific tasks on computers and mobile devices. Unlike system software that manages hardware, applications focus on end user needs, from writing documents to editing photos to staying connected with others. These programs run on top of operating system and provide the interface through which we can interact with technology every day. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जिस तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक वर्किंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मींस मखसूस काम करने के लिए और किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। Application software is used to perform various applications or tasks on the computer. For example, Google Chrome, Word, Excel and PowerPoint. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने म्यूज़िक सुनना होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम मीडिया प्लेयर को यूज़ करेंगे। सो जो मीडिया प्लेयर है वो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो तो हम मीडिया प्लेयर से कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ओनली वन टास्क। ईच सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. We have more examples of application software. Microsoft products such as Office, PowerPoint, Word, Excel, Outlook. Music application software like Pandora and Spotify. Real-time online communication like Skype, Google Meet and Zoom. Team collaboration software like Slack. Internet browsers like Chrome, Safari and Firefox. These are the examples of web browsers. A web browser is the tool that you use to access the World Wide Web for internet searching. Multimedia software like MX Player and VLC Media Player. If you want to listen MP3 or watch movies that you downloaded, you will need to use Media Player. Almost every other application that you are using and that you are seeing in your computer and in your mobile devices is an example of application software. Categories of application software: productivity. With the help of word processor, you write a letter and create many other kinds of documents. Communication, email, messaging, and video conferencing. For communication with each other, we use email, messaging, and video conferencing. E-commerce for shopping, banking, and online transactions. Creative photo editing, video editing, and design tools. Entertainment, gaming, streaming, and media players. There are many different games that you play on your computer, and for gaming we use entertainment software. Security, antivirus, firewalls, and data protection. Next we have productivity software. Getting work done. Word processors create and format documents, reports and letters with professional layouts and styling options. वर्ड प्रोसेसर को हम क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए एंड फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं और डिफरेंट स्टाइलिंग ऑप्शंस है जिससे हम अपनी रिपोर्ट्स को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं. स्प्रेडशीट्स एनालाइज डाटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड विजुअलाइज इंफॉर्मेशन थ्रू टेबल्स एंड चार्ट्स. टेबल्स और चार्ट्स की हेल्प से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन डिज़ाइन इंगेजिंग स्लाइड शोज टू कम्युनिकेट आइडियाज विजुअली विद योर ऑडियंस. अपने आइडियाज़ को हम प्रेजेंटेशंस के थ्रू ऑडियंस को दिखा सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. अभी जो आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं ये हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Creative software. Photo editors like Photoshop and GIMP for image manipulation. Video editing software such as Premiere Pro and Final Cut for cinematic content. Graphic design tools including Illustrator and Canva for visual creations. Audio production software for music composition and sound engineering. We used all these software for photo editing, video editing, visual creations
and music composition. Next, communication software. For the communication with each other, we use email clients, messaging apps, and video conferencing. Email clients exchange messages, documents, and information across the world instantly. Messaging apps, real time text, voice, and video communication with individuals and groups. Video conferencing, face to face meetings regardless of physical location, enabling remote collaboration. Let's overview our lecture. Application software, computer program designed to perform specific tasks. Productivity software that enhance work efficiency through document creation, data analysis, and project management. Creative software for photo editing, video production, and graphic design. Students, watch and listen this video carefully. Hope you will understand this lecture. Take care. Allah Hafiz.